The un
area of electronics and IT, matching the pace with the latest technological advancements. NIELIT, serving the nation, empowering the citizens. National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT, is a premier institution under Ministry of Electronics and IT for capacity building and skilling in the field of electronics and information technology sector. Besides imparting training in conventional areas of electronics and information technology, NIELIT centers are also imparting training in various emerging technologies such as cloud computing, robotics and artificial intelligence, data science, cyber security, blockchain, Internet of Things, etc. Having pan-India presence through its 40+ own campuses, 800+ accredited institutes and 7,000+ facilitation centers, NIELIT caters to the youth across the country. Training provided by NIELIT enhances the skills of these youths for making them employable. Setting up of startups and finding suitable and dignified livelihood with a special emphasis on Northeast, J&K and Ladakh regions. Believing in the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Reaching the unreached through science and technology. NIELIT is continuously contributing to the success of government's flagship programs like Digital India and Donor Project, Future Skill Prime Project, settings up of cyber forensic training cum investigation labs in all northeastern states, setting up medical electronics labs in various northeastern states, skill development of SC/ST economically weaker section females in aspirational districts in the country, including various northeastern states, skill development in electronic system design and manufacturing ESDM project. NIELIT assures the nation that it will continuously strive for empowering the citizens of the country, adding more and more capacities and capabilities to its existing strengths, while endeavoring to be the global leader in the area of electronics and IT, matching the pace with the latest technological advancements. NIELIT, serving the nation, empowering the citizens. National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT, is a premier institution under Ministry of Electronics and IT for capacity building and skilling in the field of electronics and information technology sector. Besides imparting training in conventional areas of electronics and information technology, NIELIT centers are also imparting training in various emerging technologies such as cloud computing, robotics and artificial intelligence, data science, cyber security, blockchain, Internet of Things, etc. Having pan-India presence through its 40+ own campuses, 800+ accredited institutes and 7,000+ facilitation centers, NIELIT caters to the youth across the country. Training provided by NIELIT enhances the skills of these youths for making them employable. Setting up of startups and finding suitable and dignified livelihood with a special emphasis on Northeast, J&K and Ladakh regions. Believing in the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Reaching the unreached through science and technology. NIELIT is continuously contributing to the success of government's flagship programs like Digital India and Skill India, ensuring inclusive development while bridging the digital divide across the country.
In line with the digital Northeast vision of the Government of India, almost half of total NIELIT owned campuses are located in northeastern states. With the funding support of mighty Government of India, NIELIT is playing an instrumental role in executing various important skill development projects in northeastern states, namely Northeast Capacity Building Project (NECB), Capacity Building of State Government Officials of Northeastern Region, Donor Project, Future Skill Prime Project, settings up of cyber forensic training cum investigation labs in all northeastern states, setting up medical electronics labs in various northeastern states, skill development of SC/ST economically weaker section females in aspirational districts in the country, including various northeastern states, skill development in electronic system design and manufacturing ESDM project. NIELIT assures the nation that it will continuously strive for empowering the citizens of the country, adding more and more capacities and capabilities to its existing strengths, while endeavoring to be the global leader in the area of electronics and IT, matching the pace with the latest technological advancements. NIELIT, serving the nation, empowering the citizens. National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT, is a premier institution under Ministry of Electronics and IT for capacity building and skilling in the field of electronics and information technology sector. Besides imparting training in conventional areas of electronics and information technology, NIELIT centers are also imparting training in various emerging technologies such as cloud computing, robotics and artificial intelligence, data science, cyber security, blockchain, Internet of Things, etc. Having pan-India presence through its 40+ own campuses, 800+ accredited institutes and 7,000+ facilitation centers, NIELIT caters to the youth across the country. Training provided by NIELIT enhances the skills of these youths for making them employable, setting up of startups and finding suitable and dignified livelihood with a special emphasis on Northeast, J&K and Ladakh regions. Believing in the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Reaching the unreached through science and technology. NIELIT is continuously contributing to the success of government's flagship programs like Digital India and Skill India, ensuring inclusive development while bridging the digital divide across the country. In line with the digital Northeast vision of the Government of India, almost half of total NIELIT owned campuses are located in northeastern states. With the funding support of mighty Government of India, NIELIT is playing an instrumental role in executing various important skill development projects in northeastern states, namely Northeast Capacity Building Project (NECB), Capacity Building of State Government Officials of Northeastern Region, Donor Project, Future Skill Prime Project, settings up of cyber forensic training cum investigation labs in all northeastern states, setting up medical electronics labs in various northeastern states, skill development of SC/ST economically weaker section females in aspirational districts in the country, including various northeastern states, skill development in electronic system design and manufacturing ESDM project. NIELIT assures the nation that it will continuously strive for empowering the citizens of the country, adding more and more capacities and capabilities to its existing strengths, while endeavoring to be the global leader in the area of electronics and IT, matching the pace with the latest technological advancements. NIELIT, serving the nation, empowering the citizens. National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT, is a premier institution under Ministry of Electronics and IT for capacity building and skilling in the field of electronics and information technology sector.
Besides imparting training in conventional areas of electronics and information technology, NIELIT centers are also imparting training in various emerging technologies such as cloud computing, robotics and artificial intelligence, data science, cyber security, blockchain, Internet of Things, etc. Having pan-India presence through its 40-plus own campuses, 800-plus accredited institutes and 7,000-plus facilitation centers, NIELIT caters to the youth across the country. Training provided by NIELIT enhances the skills of these youths for making them employable. Setting up of startups and finding suitable and dignified livelihood with a special emphasis on Northeast, J&K and Ladakh regions. Believing in the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Reaching the unreached through science and technology. NIELIT is continuously contributing to the success of government's flagship programs like Digital India and Skill India, ensuring inclusive development while bridging the digital divide across the country. In line with the digital Northeast vision of the Government of India, almost half of total NIELIT owned campuses are located in northeastern states. With the funding support of mighty Government of India, NIELIT is playing an instrumental role in executing various important skill development projects in northeastern states, namely Northeast Capacity Building Project NECB, Capacity Building of State Government Officials of Northeastern Region, Donor Project, Future Skill Prime Project, settings up of cyber forensic training cum investigation labs in all northeastern states, setting up medical electronics labs in various northeastern states, skill development of SC/ST economically weaker section females in aspirational districts in the country, including various northeastern states, skill development in electronic system design and manufacturing ESDM project. NIELIT assures the nation that it will continuously strive for empowering the citizens of the country, adding more and more capacities and capabilities to its existing strengths, while endeavoring to be the global leader in the area of electronics and IT, matching the pace with the latest technological advancements. NIELIT, serving the nation, empowering the citizens. National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT, is a premier institution under Ministry of Electronics and IT for capacity building and skilling in the field of electronics and information technology sector. Besides imparting training in conventional areas of electronics and information technology, NIELIT centers are also imparting training in various emerging technologies such as cloud computing, robotics and artificial intelligence, data science, cyber security, blockchain. Very good afternoon, ladies and gentlemen, our amazing students and honorable dignitaries on the dais, requesting everyone to please take a seat. It's an esteemed honor for me on behalf of NIELIT Bhubaneswar. Of course, it's an incredible journey that we have finally have such an incredible vision, mission, and of course, when I see the mass of students in here, kete excited ho chho hame samaste? Subilani mote? All right, wonderful. So, excitement, enthusiasm, energy so ajiro beautiful day ame start koriba, and a heartiest welcome to all our dignitaries. Sabhi ko mera pyar bhara namaskar. Thank you so much for gracing this beautiful occasion. We have with us our Director General NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi, sir. Can we have a round of applause, everyone? We have Mr. V. Krishnamurthy, ED Kolkata. Once again, a heartiest welcome to you as well, sir. We have our DIC Bhubaneswar, Mr. Anurag Mathur, sir. And we have our Registrar NIELIT, Shri R.P. Pandey. जैसा कि कहा जाता है, किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान की आराधना के साथ होनी चाहिए, तो आज की भी इस पावन दिन की शुरुआत मैं चाहूँगी आमे दीप प्रज्वलन करिकी आरंभ करिबा, requesting everyone to please proceed for the lamp lighting ceremony now.
Bye, ruo. Bye. Takilo tikilo. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। विघ्नहर्ता का नाम लेकर हमने आज की इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत की. A beautiful initiative is on its way. So once again, I welcome you all to the inauguration ceremony of NIELIT Bhubaneswar. Thank you so much everyone, all the guests, all the media personals who are here for gracing this beautiful day. It's indeed a pleasure. आम पाई निहाती भाव को बहुत गर्वर कथा. आज ये सुंदर दिन रे ब्यूटिफुल इनिशिएटिव रे आमे समस्ते एकत्रित होइछु. अनुरोध करिबी समस्त को निज निज स्थान ग्रहण करिवे. And on this account, as we know, with new roles, new responsibilities, and of course, under the leadership of all our dignitaries here, we have come a long way with a bright and a gorgeous future of NIELIT Bhubaneswar, as we have Dr. Madan Mohan Tripathi sir here with us. Sir, it's an honor to have you here, of course, and under your leadership and vision, we are looking forward to a great future ahead. And now may I request our ET Kolkata, Mr. V. Krishnamurthy sir, to kindly honor our DG sir with the Uttarya and a flower bouquet as a token of love and a mark of respect on behalf of NIELIT Bhubaneswar. I may now request our DIC Bhubaneswar, Mr. Anurag Mathur sir, to please honor our ET Kolkata, Mr. V. Krishnamurthy. Requesting Mr. Prashant Gupta sir to please join us on stage and kindly honor our DIC, Shri Anurag Mathur sir. Thank you so much, Prashant sir. And last but not the least, requesting on stage for Mr. Umakant Tripathi sir to please honor our Registrar NIELIT, Shri R.P. Pandey sir. Thank you so much. Requesting dignitaries to please take a seat now. And with this, our beloved students have prepared something very special for us. So I'll request all the lovely students to please begin with the Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला
सूत्रं ब्रह्म विचारसार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you so much, students. That was an absolutely beautiful effort, and of course, under the supervision, under the vision, with the beautiful aim, as we say, नया भारत, नया अवसर, नई समृद्धि के साथ आज हम यहाँ जुड़े हैं। और जैसा कि हमारे मान्यवर पीएम जी ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी, कि it's now time that we reach the unreachables through science and technology. So once again, extend a warm welcome and regards to each one of us present over here. And to address you all formally and extend the welcome note, I may please request our DIC Bhubaneswar, Mr. Anurag Mathur, sir. A very good afternoon, all of you. On behalf of NIELIT, I hereby welcome Dr. Madan Mohan Tripathi as a chief guest for this inaugural session of NIELIT Bhubaneswar. I also welcome hereby Shri Krishnamurthy sir, Executive Director NIELIT Kolkata, along with Shri R.P. Pandeji, Registrar NIELIT Delhi. I extend my welcome wishes to all the dignitaries present over here, along with all the press media personals, industrial representatives, our NIELIT training partners, and dear students. So a short introduction of the NIELIT. NIELIT, as you all are aware, it is National Institute of Electronics and Information Technology. It is an autonomous organization under Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. It deals in basically capacity building and formal and non-formal training programs in electronics, information and communication technology. Pan-India basis, NIELIT has already till now having 47 centers, along with 700 accreditation centers and 9,000 plus facilitation centers. NIELIT Bhubaneswar, since its operations all over Odisha, we are having around 40 accredited centers and around 170 facilitation centers. So NIELIT Bhubaneswar Center is also engaged in the capacity building programs along with the trainings. Basically, we have started in O levels, data science and information security, and soon we are going to execute prestigious projects of Ministry of Information Technology like drone projects, along with capacity building programs for state government employees in information security and trainings for police personnel departments also. So with this, I again warmly welcomes all the dignitaries, our chief guest, and all the guests present over here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the wonderful words. And जैसा कि sir ने बताया, starting from training to skill development and now capacity building, arms of electronics and IT is definitely NIELIT. Moving on, next I would like to welcome on the dais, on the podium, we have with us our Executive Director, NIELIT Kolkata, Shri V. Krishnamurthy, sir. I would please request you to kindly sprinkle some few words to the earnest gathering here.
Thank you. Good evening, students, friends, dignitaries on the dais, especially my Director General, Dr. Madan Mohan Tripathi ji, my colleague Anurag Mathur, and R.P. Pandey ji. Good evening, dignitaries of the dais, friends, and my dear students. Thank you for giving me this opportunity to speak few words about NIELIT Bhubaneswar in particular and NIELIT as a whole to all the training partners, accredited partners, industry professionals, friends and from the media who have come here. NIELIT Bhubaneswar Center is set up based on a decision of our governing council in its 34th meeting in December 2016 with a budget outlay of 744 lakhs. The center has been operating on a rent-free built-up space provided by Odisha state government in the year. On the north side of the OCAC tower, Acharya Bihar, Bhubaneswar. Center is currently having 2 IT labs, 1 electronic labs, 2 well-equipped classrooms with all the digital facilities available, a library, a conference with a good VC facility in a carpet area of 5,200 square feet. It is ably supported and led by Mr. Anurag Mathur with his team. It is accredited, it has got good chain of accredited and facilitation centers. It is undertaking programs through them, and it is running NSQF aligned courses as well as non-NSQF. Very recently, NIELIT Bhubaneswar has signed an MOU with Shri University Cuttack for a joint certification and collaboration in the area of IECT and other industrial training programs. Thank you, sir. This could happen only because of you. It undertakes other training and examination activities in the various areas. So we are also coming out as one of the examination partners for the country and ably in a position to undertake all online, offline recruitment examinations for the government. Now, as Anurag has already told you, it is undertaking government funded projects, and it has also worked in the areas of e-waste and information security in the form of conducting programs through workshops. Certain upcoming projects which it is going to undertake are cyber security training for the employees of urban cooperative banks under the mission Awareness, Vriddhi and Training for Urban Cooperative Banks in the state of Orissa. NIELIT Bhubaneswar has been chosen as a participating institute in unmanned aircraft systems for a drone program of our ministry. So that's a very big thing for NIELIT Bhubaneswar. NIELIT Bhubaneswar is planning to undertake a training program in cyber security and information security with the Orissa Police Department. NIELIT Bhubaneswar is exploring in various areas for a tie-up with state government departments to explore placement requirements and as well as corporate social responsibilities so that it can jointly do something good for the country. Capacity building training program for the government employees in information, cyber security, social media, etc. has already been covered by my good friend. To industry partners and students, industry partners in particular, and students in general, NIELIT at pan-India level, I wanted to tell few things. NIELIT is trying its level best in fulfilling the dream of Atmanirbhar Bharat through its advanced science and technology training programs, which is a vision of our Prime Minister, Dr. Narendra Modi ji. It is trying to build a self-reliant India in terms of
it is trying to learn from the recent COVID and Industry 4 outcomes, that how India can become self-reliant nation amid all these technological challenges. So we are trying to address the labor requirements of the country in the age group of 15 to 30, which so that certain competencies can be developed. So, and at the national level, we have NIELIT is again a unique organization which is competing with the certain real good national institutes of importance. Okay, it has got at its Calicut Center good capacity building for VLSI, and it takes certain product developments wherein industries solutions are being provided from Calicut Center, from Aurangabad Center, and certain national building programs have been undertaken in the form of software developments, in the form of data processing in mine Kolkata Center. We are very closely working with the Department of Agriculture and Farmers Welfare for agricultural census project. And we also undertook programs on NPR. So we are a good team under the able leadership of Dr. Madan Mohan Tripathi ji. We want to march forward. So we have wide range of basket of activities wherein we can undertake R&D projects. We can be nodal implementing agencies for certain exam related activities, certain product development activities. So with this, I want to conclude. Come join the NIELIT family in transforming everybody's life and exploring a bright future. Thank you one and all for a patient hearing. Jai Hind. Thank you so much. And as we got to know that the future and scopes here, with the future of NIELIT Bhubaneswar sitting right in front of all of us. So big round of applause and congratulations once again on being a part of such an esteemed organization. Moving ahead, it's now time that we hear our chief guest, Director General NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi. Sir, can we give it up, everyone? Let's have a round of applause and let's welcome Dr. Madan Mohan Tripathi, sir. Thank you. And very good evening to all of you. Namaskar. मंच पे बैठे हुए मैं अपना भाषण हिंदी में ही दूंगा जिससे कि सब लोग अच्छे से सुन सकें. ईडी कोलकाता श्री वी कृष्णमूर्ति जी, डायरेक्टर इंचार्ज नाइलेट भुवनेश्वर श्री अनुराग माथुर जी, रजिस्ट्रार नाइलेट हेडक्वार्टर श्री आर.पी. पांडे जी, इंडस्ट्री से आए हुए कुछ मेरे मित्र जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, मिस सरिता मिश्रा, सेंटर हेड TCS, प्रियदर्शी नानू पानी, फाउंडर एंड CEO CSM, जयश्री मोहंती, डायरेक्टर ल्यूमिनस इन्फोवे, निरंकार दास, GM जेमिनी कंसल्टेंट्स, गणेश मिश्रा, द फाउंडर वे इंडिया, एंड उषा कांत मिश्रा, CEO ट्राइक सर्विसेज, और भी इंडस्ट्री से जो मित्र यहाँ हैं, मीडिया, हमारे छात्र, नाइलेट भुवनेश्वर परिवार के सभी लोग, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि नाइलेट भुवनेश्वर सेंटर का हम उद्घाटन कर रहे हैं. हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन एक फॉर्मल उद्घाटन होना आवश्यक था जिसका मौका हमें मिला. और आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इसका उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन ये दूसरी बार उनका प्रोग्राम नहीं हो पाया. कुछ ऐसे कारण थे जिनके नाते उनका आना नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं. और हमें उम्मीद है भविष्य में जब नाइलेट का एक बड़ा कैंपस बनेगा तो वो ज़रूर आएंगे इसके उद्घाटन में. ऐसी मेरी सोच है. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार को,
जिन्होंने हमें ये स्पेस दिया जहाँ पे नाइलेट सेंटर खुल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत सारी सहायता प्रदान की, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री हरकेश शर्मा जी, और डॉक्टर जयदीप मिश्रा हु इज़ एडिशनल सेक्रेटरी एंड अर्लियर डीजी ऑफ नाइलेट, और सभी का आभार हमें सहयोग करने के लिए कि आज ये सेंटर इस रूप में खड़ा हो सका। हालांकि ये बहुत छोटी शुरुआत है। जो हमारे और सेंटर हैं भारत में जगह जगह, काफ़ी उनका बड़ा कैंपस है। उनका सेटअप एक इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह है, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मल प्रोग्राम्स ही हम चलाते हैं, एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, तरह तरह के कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। बट ये सेंटर चूँकि छोटा है तो अभी यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज ही चलेंगे। सो नाइलेट दोनों तरह के प्रोग्राम चलाता है, AICTE अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम्स और NCVT अप्रूव्ड स्किलिंग प्रोग्राम। लगभग 100 के करीब हमारे प्रोग्राम हैं जो NSQF अलाइंड हैं, लेवल 2 से लेके लेवल 7 तक, हाईएस्ट लेवल तक। और आने वाले समय में ये रेजोल्यूशन है नाइलेट का कि जो भी प्रोग्राम होंगे वो NSQF अलाइंड ही होंगे। मैं आपको बता दूं, देश में अब 2 ही रेगुलेटर रह गए हैं। एक तो AICTE है टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो डिग्री प्रोग्राम को रेगुलेट करता है, दूसरा NCVT है जो स्किलिंग प्रोग्राम को रेगुलेट करता है, और एक तीसरा UGC है जो बाकी प्रोग्राम को, और आने वाले टाइम में तीनों मर्ज हो जाएंगे इस देश में। तो NSQF में 4.5 एंड अबव जो प्रोग्राम हैं वो डिग्री की तरफ है, स्किल प्रोग्राम है लेकिन डिग्री की तरफ है, एंड 4 एंड बिलो जो है वो स्कूल, ITI, डिप्लोमा, इस तरफ की मतलब स्किलिंग से रिलेटेड है। नाइलेट NCVT की अवार्डिंग एंड असेसिंग बॉडी भी है, सो वी हैव ए पावर टू अवार्ड द डिग्री एंड आल्सो डू द असेसमेंट। सो ये नाइलेट के बारे में है। स्किलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मुझे एक बात याद आती है अब्दुल कलाम जी की, कि उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ नॉट इट्स पॉपुलेशन बट अनस्किल्ड पॉपुलेशन। इस देश की समस्या क्या है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, और वो भी जो यूथ है, उसका कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वो प्रॉपरली स्किल्ड ही नहीं है। तो ये बड़ा ही मेजर टास्क है। अगर आप देखेंगे पूरे देश के स्पेक्ट्रम को, तो डिजिटल स्किलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। एक 10 साल का बच्चा से लेके एक 70 साल के आदमी को किसी न किसी तरह की डिजिटल स्किल की ज़रूरत है, और अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसे 100 करोड़ लोग होते हैं देश में। तो आप कितना भी काम करेंगे स्किलिंग का, शायद सारी एजेंसियां भी देश के मिल के करेंगी तो कभी इस टारगेट को मीट आउट नहीं कर सकती हैं। लेकिन नाइलेट ने फिर भी एक टारगेट लिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ स्किल्ड मैन पावर जॉब मार्केट में देना है, क्योंकि इंडस्ट्री को इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा बहुत सारे स्तरों पे इंडस्ट्री के साथ बातचीत हो रही है आजकल, क्योंकि नाइलेट चूँकि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा ही फोकस तरीके से स्किलिंग करता है। एट प्रेजेंट जो हमारी कैपेसिटी, हर साल लगभग 10 लाख लोगों को हम ट्रेन करते हैं, स्किल लेवल 2 से लेके लेवल 7 तक, जिसको हम डबल करने वाले हैं इसी साल 20 लाख, और इस तरीके से 5 साल में लगभग 1 करोड़ लोग को। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अगर इससे बड़ा कर सकें। तो जहां हम अपने सेंटर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं जगह जगह, हमने एक वर्चुअल एकेडमी भी शुरू की है नाइलेट की। नाइलेट की वर्चुअल एकेडमी अभी लगभग 1 लाख कंकरेंट यूजर्स को सपोर्ट कर रही है, एंड दैट विल बी एक्सपेंडेड टू सपोर्ट 10 लाख कंकरेंट यूजर्स आल्सो इन फ्यूचर, सो दैट हम देश के हर कोने कोने में पहुंच सकें। क्योंकि ये हमको समझना होगा कि एडटेक रियलिटी है आज की डेट में। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन एक रियलिटी है। अब वो शायद समय बदल गया फिजिकल एजुकेशन का, निश्चित रूप से कहीं ब्लेंडेड मोड में और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन नाइलेट ने बहुत ही निच एरियाज़ में वर्चुअल एजुकेशन को डेमॉन्स्ट्रेट किया है। हमारा वर्चुअल एजुकेशन साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स में एक एग्जाम्पल है। वी आर ट्रेनिंग अराउंड 1.5 लाख पीपल फॉर RBI एंड मेनी डिफेंस पीपल। हमारा कोहिमा में जो साइबर फोरेंसिक लैब है, दैट इज़ यूज्ड बाय डिफेंस पर्सनल फॉर, आई थिंक दे हैव सॉल्व्ड मोर देन 500 cases. So it is completely available on virtual platform. Even the labs are available virtually. We have also demonstrated the electronics training, chip designing training, hardware training through our remote hardware lab setup, where any student sitting in any part of the country can get access to the lab, actual lab,
can do the programs, they download remotely into the FPGA or anything, they can run it, they can see that how it is working. So we are also taking steps in the through direction of the virtual education, so that we can provide the standard education and standard skilling program to all the students across the country. So these are the few initiatives which is very important for us. I was just going through the Odisha IT policy 2020, and where government has mentioned that they want to create 1 lakh jobs in IT, ITS and ESDM sector per year, and train 10,000, skilling up 10,000 students, and creating an economy of 10,000 crore in IT, ITS industry. That's a good thing. And you know that government of India has already stated through all its reports of NASCOM and all that India can become $1 trillion digital economy. So to become $1 trillion digital economy, where 300 million is only for electronics manufacturing, the most important bottleneck which everybody is understanding is the lack of talents, lack of skilled manpower. So that is the one of the bottleneck, along with other issues and challenges which are there. So role of industry and NIELIT both has become very important. If we work in silos, I don't think the required manpower for the industry can be provided. So we have been, right now discussing with, at least in electronics sector, I have personally discussed with many India heads like Jaya Jagdish from AMD India, and many other people in electronic sector skill council, telecom sector skill councils, NASCOM, that how can we sit together, NIELIT and industry and IITs and other institutions, and we create curriculums as per the requirement of the industry, and NIELIT can do the certification of the trainers, master trainers of the NIELIT, and then those trainers can again train students, certify them and feed back to the industry. So that kind of a closed loop system is required to provide a pipeline of talent to the industry, so that they will be able to meet the requirement. Because we all understand that nowadays wars are not fought by defense forces, it is fought by companies. So our contribution in the world GDP is very, very less. So if we have 150 companies which are having worth of billion, maybe we can rule the world. So idea is, if you want to grow the country, you have to build companies. We have to build the industry, bigger industries. What we say bigger in India, that is a medium scale in other countries. So to build an industry, we need a talent also. So both go hand in hand. So my summation will be here in the industry partners, that they should work with NIELIT when NIELIT center is here, even though we are small right now, but we can expand very fast depending upon the requirement. We have all necessary resources, and create such curriculum which is required for the industry, and that so that the students and youth of Odisha state, they can be meaningfully employed and gainfully employed with good packages. And also there should be entrepreneurs and startups coming out of this. I have seen STPI, they are having a lot of center of excellences. I requested them to provide internship to our students, so that these students who are being trained, they are trained and then finally being absorbed by the companies there. So that is a more important thing. Also, I'll request our NIELIT Bhubaneswar Center to work very closely with the schools and universities, colleges, students also. Because now digital skilling is required for everyone. We have done a very good MOU with Jammu Kashmir School Board of Education. Now NIELIT skilling programs are completely integrated from class 6 to class 12 in the Jammu School Board. So what will happen? Suppose students get drop out after 10th or 12th or 6th. So they have some kind of IT skills also. They are not able to pursue their education, but they will be able to get some employment. And similarly, we should work with graduate students also, offer them finishing school programs, so that they are employed by the industry. Because NIELIT's role is to bridge the gap between the academia and the industry. That NIELIT has to understand and work very closely.
we are also planning to have a university within NIELIT, which can offer a multiple entry exit system based on the accreditation, because that will help industry a lot. What happens in the industry, many times people do the job but they are not able to do complete their degree, but they want to move up in the value chain, they have to have the education also. So NIELIT can offer through its digital platform different skilling courses, where we are the spoke of IITs and ISCs, international universities and industry. And I mean, industries can also offer our program on our digital platform. And people from colleges, schools, other engineering colleges in state governments, and also people from industry, they can do those programs, those skilling programs which is actually required for their job. And once the credit is completed, NIELIT can award a degree to them also. So we are working on such flexible education system also, so that the skilling and degree goes together parallelly in the country. So these are the few initiatives which NIELIT has taken, and hopefully with help of all of you who are here, the help of state government of Odisha and the help of central government, will be able to fulfill the aspirations of the state, the aspiration of the students, and the aspiration of the country. So with these words, I'll thank all of you and also request to support NIELIT Bhubaneswar. Thank you. Thank you so much, sir, for bringing us through such facts and figures. That was absolutely amazing hearing you. Moving ahead, it's now time that we officially also launch our brochure. So I'll request all the dignitaries on the dais to please go ahead and let's unveil the brochures now. So official brochure, everyone, requesting for a thunder round of applause. And our journey henceforth is definitely going a long, long way. So congratulations everyone who is here. Thank you so much for gracing the evening. It was indeed a pleasure for all us being a part of such an incredible mission, that is switching on to digital India, because that is the way how we can power to empower. All right, quickly moving on, as we have all our guests on stage. So we have a small token of love on behalf of your own family that we would want you to present. So I'll once again request our Executive Director, Sir, Kolkata, Mr. V. Krishnamurthy, sir, to please present a small gift, a small memento to our DG NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi, sir. वेल दो ऐसी किताबें जिसमें आई गेस भगवत गीता जिसको माना गया है कि हर दुविधा का हल कहीं मिल सकता है, तो सिर्फ यहीं मिल सकता है. थैंक यू सो मच सर. मूविंग अहेड, आई मे नाउ रिक्वेस्ट DIC Mr. Anurag Mathur sir to please present this lovely gift to our ED Kolkata, Mr. V. Krishnamurthy sir. Thank you so much. Requesting on stage for Mr. Prashant Gupta ji. I request Mr. Prashant Gupta sir to please join us on stage. Oh, he's right here. Sorry sir. I'll request you to please honor Mr. Anurag Mathur sir. And last but not the least, may I please call upon Mr. Madan Tripathi sir to kindly honor, as we have our registrar with us, Shri R.P. Pandey sir. Thank you so much. And now to render the official vote of thanks, may I please call upon our Registrar NIELIT, Shri R.P. Pandey sir.
Namaskar. On behalf of NIELIT team, a very warm good evening to all the dignitaries present on the dais and the respected audience present in this hall, connected over or the connected over web for this inaugural event of NIELIT Bhubaneswar. The day is very cloudy, though the wishes are warm, and I believe it is really cloudy this moment also. The city of Bhubaneswar is very auspicious with the blessings of Bhagwan Shri Jagannath, and I am really gratified to deliver the vote of thanks on this stepping day where NIELIT is making a presence in the city, and the occasion is graced by our Honorable Chief Guest, Dr. Madan Mohan Tripathi ji, the Director General, NIELIT. Sir, we are really obliged to have you on this occasion, and your dynamic leadership and the support which you have extended to the complete NIELIT team and the Bhubaneswar team, especially to make this happen in a very short span of time. Our special thanks to Ministry of Electronics and IT, Government of India, for extending all the full support, being our administrative ministry. I would also like to convey my gratitude to the dignitaries on the dais and the complete NIELIT team who worked effortlessly to establish the center, and hope that the NIELIT Bhubaneswar will rise as an institute of regional importance and meet the expectations of the student community at large to provide a suitable learning platform in the field of IT and electronics. The center is also expected to meet the specialized training manpower needs of ICT and IT enabling industry grooming in the state of Odisha. At the end, I would also like to convey my sincere thanks to all the academia, industry representative and media houses present here to give a full coverage of the complete event and to be present here. It's really a great time with you all. And lastly, on behalf of the NIELIT team, I would like to seek your support and invite collaboration for serving the capacity building needs of the state and thereby enabling the India poised to be a $1 trillion digital economy. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Jai Hind, Jai Bharat. And जैसा कि sir ने mention किया कि the day is a bit cloudy, but it is always believed that something happens. Like if it rains before you have some initiative to go through, भगवान Almighty कहते हैं आज मैं बरसात कर देता हूँ पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है. तो I think we have started off the formal inauguration with the blessings of Almighty, and we are definitely looking forward to going a long way. And with this, I would also like to thank all our dignitaries who have taken out time from their busy schedules, marking and gracing this evening. Thank you so much for coming here and being a part. Moving on, for our lovely students, we have so much expectations and we definitely believe that we are the future, aren't we? I want to hear a louder yes. Are we? Lovely, all right, with that incredible energy, I think it's now time that as we have some industrial experts with us, we have our students with us, so if we can have a one-on-one interaction for a while, which would definitely take this evening further ahead. Can we have some microphones to the audience, and any questions from the students? We are really willing to have an interactive session here now. No questions from the students. सब तैयार हैं एकदम? कुछ तो होगा. All right. So once again, I'll request, sir, अगर हमारे students के पास question नहीं है, तो 2 शब्द आप उनके लिए अगर कहें for motivating them, because they are definitely going to take NIELIT Bhubaneswar to next level, and then we can close with the ceremony. हेलो नहीं, अगर उनके पास क्वेश्चन नहीं है तो वो स्टूडेंट नहीं है. I agree. I think they should have some questions. अभी उन तक पहुंचा नहीं माइक शायद. Good afternoon, sir, all of you. And my name is Mohesh Kumar Hemram. I come from Moirvanj in Baripada. Now, sir, take Hindi.
सर एनी लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम NITL जो हम कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ से, हम तो गांव के बच्चे हैं कि हम यहाँ पे अगर हम शहर में पढ़ने के लिए आए हैं तो हम शहर में पढ़ रहे हैं, तो पर गांव में तो सर ये जो प्रोवाइड तो उन लोग को नहीं मिल रहा था। सर हम कैसे ट्राई करेंगे उन लोग को हम मतलब पहुँचा सकते हैं ये वाला संवाद कि हम नहीं कर सकते हैं ये वाला, मतलब ये इसमें हमको इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इतना टेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो हम मतलब गांव के हर बच्चा को पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करने से हमको इतना सारा टेक्नोलॉजी मिलेगा सर। ठीक है, तो आप मतलब ये चाहते हैं कि और लोगों को कैसे पता चलेगा नाइलेट के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में? गांव में सर बहुत लोग तो पता नहीं है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। जब तो सर हम शहर में हैं तो हमको थोड़ा सा पता चला है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पर गांव की सर और कोई तो नहीं पता नहीं है उन लोग। ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है आपका, और शायद हमारे लिए बड़ा चैलेंज भी है ये। और बैठ जाइए। थैंक यू सर। हमारे जो डायरेक्टर हैं भुवनेश्वर के, ये भगीरथ काम उनको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक हमारा जो डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है जिसको हम CCC कहते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, वो देश की 22 भाषाओं में है और हमारे वर्चुअल एकेडमी पे भी अवेलेबल है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि भुवनेश्वर सेंटर एटलीस्ट डिजिटल लिटरेसी का जो 90 घंटे का कार्यक्रम है, और वो कई ऑलमोस्ट 80% राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कंपलसरी भी है, कई डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए भी कंपलसरी है, और वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मुझे लगता है देश का पहला डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है वो। तो उसको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले कि और स्किल्स हम ऐड करें, डिजिटल लिटरेसी सबसे पहली स्किल है जो जाना चाहिए। और नाइलेट इस बात के लिए प्रतिबद्ध भी है कि वो देश की सभी भाषाओं में IT एजुकेशन को आगे लेके आए। हालांकि बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन और भी जैसे O लेवल और इस तरह के जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उनको हमको लेके जाने की ज़रूरत है। इवन हम बताएं, इंडस्ट्री को नहीं पता है कि नाइलेट का A लेवल, B लेवल और C लेवल जो प्रोग्राम है जो इतने सालों से चल रहा है, जो पहले DOACC करके था, इसकी रिकग्निशन जापान, ताइवान, सिंगापुर और कोरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एज इट इज़ है। इट हैज़ बीन मैप्ड विथ देयर ओन स्किल क्वालिफिकेशंस इन दोज कंट्रीज़। लेकिन अगर शायद हम भी नहीं कर पाए कि अगर बच्चों को हम उस देश की भाषा सिखाएं तो उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल सकता है। तो इन तरह की जो अच्छे ये चीज़ें हैं, या मान लीजिए O लेवल प्रोग्राम है, आर्मी में 15 नंबर की छूट है बच्चों को जो O लेवल के हैं। कई जगह गवर्नमेंट में ये नौकरी के लिए कंपलसरी है। तो ऐसी बातें निश्चित रूप से हमें सब तक पहुंचानी चाहिए, जिस तरह से वो इन कोर्सों को कर सकें। मैं अपने बहुत स्टूडेंट से मिला हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग B.Tech M.Tech करके तो खैर जा ही रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस तरह के नॉन फॉर्मल प्रोग्राम से आगे बढ़ा है, जो A लेवल, B लेवल करके C लेवल करके गया है, और वो लोग इतनी अच्छी जगहों पे हैं। हमारा एक स्टूडेंट, ही इज़ द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ KPMG स्विट्जरलैंड। ऐसे ही कई हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं अच्छे, कई हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट नहीं है। हो सकता है कि उसने बाद में कुछ और नए कोर्स भी किए हों, बट कहीं ना कहीं वो O लेवल, A लेवल या इस तरीके से उसने IT एजुकेशन से अपनी शुरुआत की थी। और एक अच्छी बात आपको बताऊं कि नाइलेट के प्रोग्राम्स में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। वी डोंट टेक ओनली साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स, एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन कम टू द IT एजुकेशन। और अभी जो AICT ने नया फ्रेमवर्क निकाला है, एक बच्चा जो 10+2 है वो O लेवल करे और फिर A लेवल करे, उसकी लैटरल एंट्री B.Tech सेकेंड ईयर में हो जाएगी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। नाउ इट इज़ अप्रूव्ड बाई AICT। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम भी नहीं बता पाते हैं लोगों को, तो हमें ये चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, बिकॉज IT इंडस्ट्री को भी एक बड़ा मैन पावर और चीपर मैन पावर शायद उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा मैन पावर जो अच्छे कॉलेजेस से निकलते हैं वो इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं। और जिस तरीके से IT इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा लोगों की शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो नाइलेट का चैनल एक अच्छा चैनल हो सकता है उस तरीके से। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमको हर जगह इसको लेके जाना है। हमारे जो एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं
और फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कि प्राइवेट डोमेन में हैं, वो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़े ही वैल्यूएबल पार्टनर्स हैं हमारे बहुत सालों से। मैं ये चाहूँगा कि अगर उनकी संख्या बढ़े और हम ऐसा पहुँच सकें कि हर तहसील में उड़ीसा स्टेट के कम से कम एक फैसिलिटेशन सेंटर हो, और वैसे भी सारे कॉमन सर्विस सेंटर काफ़ी हमारे फैसिलिटेशन सेंटर हैं जो लिटरेसी प्रोग्राम तो चलाते ही हैं, तो शायद जो आप चाह रहे हैं वो बात हो सकती है और हम सब तक इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो एक्रेडिटेशन सेंटर्स हैं और फैसिलिटेशन सेंटर हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। माथुर जी, तो इसको थोड़ा सा थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि कहा गया है, बूंद बूंद से महासागर बनता है, ड्रॉप ड्रॉप मेक्स एन ओशन। सो इट्स टाइम दैट वी बिकम द ड्रॉप and it's now time that we create that ocean. All right, any more questions? Yes, please. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I am Sukanya Oja, currently pursuing O-level course. And my question is, sir, now I come to know that there is a O-level course, and now I am pursuing it when I am just a graduate girl. Sir, my question is that I was reading this booklet, and in page number 13 it was written that Bhubaneswar has 6 NIELIT centers. But I was unaware that there is any NIELIT centers before, until my friend went to there. Sir, in the cities, in the urbanized area also, it is very much pity to say that people are not aware, even not students like me, they are not aware of the NIELIT center and all these programs. Then how can we create this awareness in the cities? आपका प्रश्न तो सेम है, उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। Yes, sir. Sir, I just want to tell this that in the colleges also there should be some program related to this, so that college students also can get awareness and can join NIELIT center and be a part of this. नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर बोर्ड से हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग उड़ीसा स्टेट बोर्ड से भी वो करेंगे। इवन सीबीएसई से भी ऑलमोस्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारा है कि ओ लेवल के चारों मॉड्यूल 9, 10, 11, 12 से इंटीग्रेट हो जाएं, तो बच्चा जो 12th पास करे साथ में उसको ओ लेवल की भी डिग्री मिल जाए। तो हम लोग वो कर रहे हैं जिससे आपको जाना ना पड़े, ऑलरेडी पहले से पता चल जाए। लेकिन कोशिश ये हो कि स्टेट बोर्ड में हम इसको इंटीग्रेट कर सकें जम्मू कश्मीर के मॉडल पे। Thank you, sir. Thank you so much. Any more questions? Yes, please. Good evening, all of you, and good evening, sir. My name is Birsavir Mardi. I am from Mayurbhanj district. So my question is, I am pursuing now O level. Then which sector we can get the recruitment in this O level program? ओ लेवल आईटी कर रहे होंगे आप, तो Yes, आईटी सेक्टर yes. में ही आपको जॉब मिलेगी। Then which company we can? एनी get? कंपनी यू कैन ट्राई, बट मुझे लगता है अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं और हायर सैलरी की, तो आपको ए लेवल कम से कम करना चाहिए। Sir. Thank you, sir. Thank you so much. Any more questions? This will be the last one. Good Of course, afternoon, ma'am. sir. My name is Satyaranta Singh. I am pursuing NIELIT O-level course here. So my question is, what will be the career option after the O-level? Is there any campus recruitment, direct campus recruitment after O-level? Is there availability of? See, after O level, there won't be any campus recruitment because it's a foundation level course, Yes, sir. right? But A level is an advanced diploma level course. Certainly, there will be campus recruitment after A level. Okay, sir. That was my question. Thank you, sir. Hello. Yeah. Thank you for your question. It's a very good question that is there any campus selection or campus interviews or campus placement after the O-level course? I would like to inform you
that there are companies in this tower itself where you are sitting, around 40 to 50 companies are there, and they are looking for the candidates who know something about computers. Rest they will train at their own. And in the recent past, we have some calls from BPO, Convergence, and one or two more companies, and it was shared with all of the candidates studying at NIELIT Bhubaneswar as well as other NIELIT accredited centers. And I think 2 or 3 candidates got placement in BPO Convergence itself. So it's not there that you don't have job, you have jobs, but you need to upgrade yourself, you need to update yourself with the technology and with the skills. Thank you. Thank you so much, Prashant sir. A lot of options are there. Even we have an industry meet after this, and they are ready to take the candidates, but I request all of you once again who are listening here, or those people who are connected through web, please update yourself with technology, please update your curriculum, ready with the industry. You will have a lot of options even after O-level. Even Odisha state government jobs, O-level has an opportunity. In other states also, O-level is a valid qualification for state government jobs also, as well as central government jobs also. So you have to prepare yourself for jobs. You have to update yourself. That's all. Thank you. तो सर ने एकदम स्पष्ट भाषा में कह दिया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता कोई संभाल रहा है. चलिए, आई रिक्वेस्ट जयश्री मैम इज हियर विद अस. विल डेफिनेटली लव टू हियर समथिंग. बहुत अच्छा लगा त्रिपाठी सर, आपने बड़े सुंदर तरीके से आज हिंदी में बताया सारा NIELIT के बारे में. मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी. आपने जो पॉइंटर्स बताए कि जो चीज़ हम उड़ीसा में करना चाहते हैं और उड़ीसा में करने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. तो पहला तो है कि वो डिजिटल लिटरेसी सेंटर जो आपने बोला हम ज़्यादा बनाना चाहेंगे, बढ़ाएंगे. सो इन द कमिंग ईयर हम लोग भी काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोग आगे आ रहे हैं जो चाहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी सेंटर्स छोटे छोटे जगहों में, रिमोट एरियाज़ में हों. तो उसके लिए क्या हम लोग क्या एलिजिबिलिटी स्कोप करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे. दूसरा चीज़ आप बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPI को आप इंटर्नशिप के लिए दे रहे हैं. तो ये इंटर्नशिप तो मेरे ख्याल इंडस्ट्री वालों के लिए भी लागू होनी चाहिए. इंडस्ट्री में भी हम ले सकते हैं इंटर्नशिप. तो इसका भी एक मुआयना और एक पार्टनरशिप अगर करा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे लोकल जो है IT कंपनीज़ वो भी कुछ लेंगे. हम सब जगह से ले रहे हैं, एग्जाम भी से ले रहे हैं, सब जगह ले रहे हैं. तो NIELIT के कुछ एक लेने में भी हमको बड़ी संतुष्टि मिलेगी. और तीसरी चीज़ बड़ी अच्छी लगी आपका सुन के कि जम्मू बोर्ड में ऑलरेडी ये जो हो रखा है डिजिटल लिटरेसी का जो आपने बोला 9th, 10th, 11th, 12th का, ये तो उड़ीसा में होना ही चाहिए. अगर NIELIT अगर यहाँ उड़ीसा में शुड बी डन अप हियर, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज़ अ बिग डायस्पोरा ऑफ IT कंपनीज इन उड़ीसा. सो ये 3 चीज़ों पे थोड़ा बताइए. काफ़ी चीज़ आप बताए, मैंने ध्यान रखा है, पर कुछ नया चीज़ बताएंगे तो वी विल डेफिनेटली कीप इन माइंड. एक्चुअली ये बातें वैसे तो मैंने आपको बताई हैं, फिर भी मैं रिपीट करूंगा. जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल से और टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल से जो हमारा डिस्कशन है और जो MOU हम करने जा रहे हैं, आइडिया ये है कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करे करिकुलम बनाने में. वो ये भी बताए कि इस पर्टिकुलर करिकुलम को पढ़ाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की लैब डेवलप करनी होगी, किस तरह के फैकल्टी चाहिए, और वो NSQF से उसको अलाइन कराएं. क्योंकि NSQF अगर एक कोर्स अलाइंड होता है तो उसको 30 इंडस्ट्री वैलिडेशन चाहिए होते हैं. तो 30 इंडस्ट्री वैलिडेशन का मतलब कि 30 इंडस्ट्री उन बच्चों को लेने के लिए तैयार है, राइट. तो ये काम अगर इंडस्ट्री करे, अगर इस तरह के मॉडल पे हम काम करें, जिस हम उनसे बात कर रहे हैं, क्यों सेक्टर स्किल काउंसिल से हम बात कर रहे हैं या NASSCOM से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी इंडस्ट्री को कवर करता है. और फिर वो हमारे मास्टर ट्रेनर्स को सर्टिफाई करें चाहें तो, और देन NIELIT विल डू द ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड सर्टिफाई द स्टूडेंट्स. तो एक ये डायनेमिक प्रोसेस है. जैसे जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी उसी तरीके से प्रोग्राम भी चेंज होते जाएंगे. वो M.Tech लेवल पे होंगे या B.Tech लेवल पे होंगे या डिप्लोमा के लेवल पे होंगे या सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, दैट डजेंट मैटर. क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो PhD से लेकर के और सर्टिफिकेट लेवल तक के लोगों की है. तो फिर लार्ज स्केल में स्किलिंग हो सकती है कि NIELIT फीडबैक करना शुरू करे टैलेंट्स को इंडस्ट्री में. तो एक ये मॉडल है. लेकिन ये एक मॉडल इंडिविजुअल इंडस्ट्री के साथ भी उतना ही ज़रूरी है. जैसे OCAC बिल्डिंग में मान लीजिए
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हो सकता है कि 10 ऐसी कंपनीज हों जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर हो। जैसे 10 लोग हैं जिनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, या कुछ और हैं जिनको बिग डेटा एनालिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट वो नाइलेट के साथ अगर बैठ के डिस्कस करते हैं तो नाइलेट और फैकल्टी को आईआईटी से या कहीं से भी ऑनबोर्ड कर सकता है अपने साथ करिकुलम के डेवलपमेंट में। और प्लस इंडस्ट्री का फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कुछ हम पढ़ा दें। अभी पढ़ाते कैसे हैं, कुछ हम पढ़ा देते हैं जो इंडस्ट्री को ज़रूरत ही नहीं होती है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं बट उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो शायद जब सब मिल के बैठेंगे और एक स्टैंडर्ड करिकुलम पे राज़ी हो जाएंगे, और नाइलेट ने मान लीजिए 1000 बच्चों को पढ़ाया और इंडस्ट्री उसमें से केवल 100 को ही हायर कर पा रही है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 100 की तो हायरिंग हो जाएगी। जो 9 से बच्चे होंगे वो भी इतने लेवल के स्किल्ड ज़रूर होंगे कि कहीं और हायर हो जाएंगे, या कोई एडिशनल स्किल फिर ऐड करेंगे, फिर आगे उनकी हायरिंग हो जाएगी। और आप देखेंगे जिनको भी स्टार्टअप हायर करेगा वो 5 साल बाद बड़ी कंपनी में चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें मिसिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है आज की डेट में 25% जो है एट्रिशन रेट है इंडस्ट्री में। लोगों को लोग मिल ही नहीं रहे हैं स्किल्ड, तो वो सिखाते हैं, सिखा के चले जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो जो गैप है उसको कैसे फिल करें, एक पाइपलाइन क्लोज लूप बनाने की ज़रूरत है। नाइलेट उसके लिए काफ़ी तैयार है कंपेयर टू एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है, आप उनको इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। और सिंस हमारा फोकस है आईआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वी कैन ऑन बोर्ड। तो मुझे लगता है ऐसे कोलैबोरेटिव सिस्टम की ज़रूरत है उड़ीसा में, जहाँ नाइलेट, इंडस्ट्री और अच्छे और इंस्टीट्यूशंस मिल के इस तरह के मॉडल को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद अच्छा मॉडल होगा ये। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And with this, if we have media personals here, we are up for the press meet. And once again, thanking all the dignitaries, all the guests who have taken out time from your schedules and been part of this beautiful evening. All our students looking forward to an amazing future. As I mentioned, and energy तो भरपूर है, बहुत सारे questions भी हैं. एंड प्रशांत सर तो है वहाँ पे हमें संभालने के लिए, वो तो पता चल ही गया। सो सर, हाउ डू वी टेक द प्रेस मीट? Any questions from media? We would open the forum for one-on-one question from all the media personals. Media भाई माने जेते माने आसचंदी तांको अनुरोध करिबी किछि प्रश्न अछि, किछि बाइट्स नेबार अछि, जदि we are opening the forum, आपण माने प्लीज आकु आसे कि you can continue. All right, so thank you so much everyone. Requesting the dignitaries will take the press meet inside the office, and once again thanking everyone for being a part. It was an honor to be hosting this lovely evening. Thank you so much everyone. Please go ahead. National Institute
That you get lateral entry into the industry in engineering. In the industry. जो IT इंडस्ट्री है वो A लेवल को 100% नौकरी देती है. Good. Thank you, sir. Data science and Python. Data science and Python. Python. I think I have met some of you. These are some of our level students also. Okay. Sir, future of data science that student and version 4 level Python and 3 are Python. Okay. So Python programming से क्या होगा आगे क्या करना है? बोलिए भाई कुछ तो बोलो ना ये कर रहे हो ना पाइथन से क्या क्या कर सकते हो सीखने के बाद What is the utility of the programming language Python? IoT में यूज हो सकता है. IoT में कर सकते हैं. क्या आपको पाइथन के बाद नौकरी मिल जाएगी लगता है? हाँ? तो ये बोलो इसलिए कर रहे हैं. इस समय तो डेटा साइंस का सबसे अधिक जॉब है. पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे डेटा साइंस करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी. तो इसको अच्छे से सीखिए. तो अल्टीमेटली पढ़ने का मतलब क्या है? For making them employable, setting up of startups and finding suitable and dignified livelihood with a special emphasis on Northeast, J&K and Ladakh regions. Believing in the vision of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Reaching the unreached through science and technology. NIELIT is continuously contributing to the success of government's flagship programs like Digital India and Skill India, ensuring inclusive development while bridging the digital divide across the country. In line with the digital Northeast vision of the Government of India, almost half of total NIELIT-owned campuses are located in northeastern states. With the funding support of mighty Government of India, NIELIT is playing an instrumental role in executing various important skill development projects in northeastern states, namely Northeast Capacity Building Project (NECB), Capacity Building of State Government Officials of Northeastern Region, Donor Project, Future Skill Prime Project, Settings Up of Cyber Forensic. He has seen an ad of NIELIT. He came here and he is for doing O level and he is studying here. He is staying here. It's a unique for at least for this center. कि बच्चा आके यहाँ अपनी सोर्सेस पे मैनेज करके पढ़ता है. Very good. He has very much interested in O level. उसने वहाँ कंधमाल में ट्राई किया. लेकिन इसका यूनिकनेस है सर इस बच्चे का. And I would like सर एक अवसर थोड़े रोके. बस सर इसको गाइड किया हूँ. He will definitely take for O level. सीधे सीधे NIELIT से इनको सपोर्ट करिए. बिल्कुल सर हम कर रहे हैं सर. ठीक है. All the best. He did not find any center there. He came. Electronics lab needs our facility. So कहाँ facility आपकी? ये कम है. क्या कर रहे हैं बच्चे? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हैं? क्या IoT किट को यूज कर रहे हैं? IoT स्टार्ट नहीं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है. तो भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए. और इसमें लगभग 60 से 65 बिलियन का जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग में $300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू भारत में आने वाला है. अभी पहली चिप डिज़ाइनिंग फैब्रिकेशन लैब गुजरात में आ रही है. तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जा बढ़ रही है. 80,000 लोगों की ज़रूरत है भारत में. तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन पे पैसे बहुत बढ़ा है. तो आपको बड़ा अच्छे से बच्चों को मेहनत कराइए. प्रोजेक्ट
after A level, you can get direct admission to BTech second. For that, you will get lateral entry into the BTech second in any university in the industry. जो IT इंडस्ट्री है वो A लेवल को 100% नौकरी देती है. Good. Thank you. Data science with Python. Data science and Python. Python. I think I have met some of you. These are some of our level students also. Okay. Sir, fusion of data science that and much more than Python. Python and 3 hours. Python. Okay. So Python programming से क्या होगा? आगे क्या करना? बोलिए भाई कुछ तो बोलो ये कर रहे हो ना पाइथन से क्या क्या कर सकते हो सीखने के बाद What is the utility of the programming language Python? IoT में यूज हो सकता है IoT में कर सकते हैं क्या आपको पाइथन के बाद नौकरी मिल जाएगी लगता है हाँ तो ये बोलो इसलिए कर रहे हो इस समय तो डेटा साइंस का सबसे अधिक जॉब है पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे डेटा साइंस करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी तो इसको अच्छे से सीखिए तो अल्टीमेटली पढ़ने का मतलब क्या है What classes you are taking right now? Who is the faculty here? What classes are there? So what experiment they are doing? Which lab? They are doing documents in LibreOffice. LibreOffice. Open source? Yes, sir. Who is the faculty here? What they are doing? Students? They are doing LibreOffice writer learning. What word processing application. क्या कर रहे हो So he is an example for us. He is from Kandamali, around 300 kilometers from us. He has seen an ad of NIELIT. He came here and he is for doing O level and he is studying here. He is staying here. It's a unique for at least for this center. कि बच्चा आके यहाँ अपनी सोर्सेस पे मैनेज करके पढ़ता है. Very good. He has very much interested in O level. उसने वहाँ कंधमाल में ट्राई किया, लेकिन इसका यूनिकनेस है सर इस बच्चे का. And I would like सर एक अवसर थोड़े लोग. हाँ सर इसको गाइड किया हूँ. He will definitely take for O level. सीधे सीधे करिए. नाइलेट से इनको सपोर्ट करिए. ठीक है. All the best. He did not find any center there. So कहाँ इंटरेस्ट दिया? आई कम क्या कर रहे हैं बच्चे? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं?